नाउ आता दिसते स्क्रीन दिसते का? हेलो, Yes, sir. we'll start from beginning. Okay. So in this session we are going to see what are the important points to be focused on for GPAT 22, so that you can cover up your syllabus in a very short period. जो भी बचे कुछ दिन हैं आपके 6-7 दिन बचे हैं, तो उसमें आप क्या पढ़ना चाहिए? तो 6-7 दिन में क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप पूरा सिलेबस कवर अप कर सको? So what are the points that has to be focused on, okay, for GPAT 22? So 14 golden points to read for GPAT 2022, so that you can qualify and you can score good rank, okay, good marks. So what are those points? So we are going to discuss that. So first we'll see what is the first golden point. So this first golden point, that is read charts, tables, summary, laws, MCQs, or any bold content is there. Okay, if any law is there, if any value is given in these two books, CVS Subramaniam, Physical Pharmaceutics by CVS Subramaniam, and again Pharmaceutical Engineering by CVS Subramaniam. So these two books will cover your at least 4-5 MCQs. तो 4-5 MCQ आपको इस बुक में से ही कवर हो जाएंगे, दोनों बुक में से। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितने भी चार्ट्स दिखेंगे इसमें वो चार्ट्स रट लो पूरा, जो टेबल्स लिखा है, कुछ समरी लिखा है, या फिर कुछ बोर्ड में कंटेंट लिखा है, कुछ डेफिनेशन लिखा है, या फिर कोई लॉ वहां पे दिया है तो वो लॉ करो। और हर एक चैप्टर के पीछे इन्होंने एमसीक्यूज भी दिए, सो यू कैन रीड एटलीस्ट दोज पार्ट। तो रीड चार्ट्स, tables, summary, laws, MCQs given in the CVS Subramaniam by CVS Subramaniam, Physical Pharmaceutics and Pharmaceutical Engineering. That will at least cover your 4-5 MCQs. So कितने चार्ट्स होंगे इसमें? मैक्सिमम इसमें होंगे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में होंगे मैक्सिमम 30 चार्ट्स। तो 30 चार्ट्स पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? तो 30 चार्ट्स पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम 1 आवर। ओके, सो इन द सिमिलर वे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का भी एक बुक है भाई उनका, सीबीएस सुब्रमण्यम का, उसमें भी कितने चार्ट्स होंगे? 35-40 चार्ट्स। तो अगेन कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम एक या दो दो 1 या 2 आवर्स। सो विद इन अ 4 आवर यू कैन कवर अप दिस two subjects, and that will cover up your at least 4 or 5 MCQs. Okay, so remember that your GPAT paper has a different sections. So pharmaceutics section is there, then pharmacology section is there, pharmaceutical chemistry is there. Okay, then cognosy is there and other subjects. So there are 5 sections of your GPAT paper. First section will be your chemistry, second will be your pharmaceutics, third will be your pharmacology, fourth one will be your cognosy, and fifth one will be the other subject. So they are going to ask you around 38 questions from chemistry, 38 questions from pharmaceutics, 28 questions from pharmacology, and 10 questions from your cognosy part, and 11 questions from other subject. So if you read this charts, table, summary, whatever I have mentioned over here, bold content, summary, law, and all that, from these books, that will cover up your at least 50% MCQs. Okay, so these two books will cover your at least 4 or 5 MCQs. Now we'll see the next point. So again, you have to read charts, tables, summary, theory, definitions, any law is given, any value is given from the book known as Industrial Pharmacy by Levon Lackman. ये बुक जो है रूप एंड कार का इंडस्ट्रियल फार्मेसी, लिवॉन लैकमैन का, Lackman and Lieberman's Industrial Pharmacy. Okay, so whatever charts are given in this book, that charts are very important. उसका एक पीडीएफ भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको सर्कुलेट कर सकता हूँ। पूरा चार्ट्स का टेबल, पूरे चार्ट्स का ही स्नैपशॉट लेके वो पीडीएफ बना है, तो आपको वो मिल जाएगा। उसमें से कम आपका 5 या 6 क्वेश्चन तो इजीली कवर अप हो जाएगा फ्रॉम इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय रीडिंग जस्ट चार्ट्स ओनली। एक हाफ एन आवर में आप पूरे चार्ट्स पढ़ सकते हो उसमें के, ठीक है। सो वट एवर चार्ट्स यू मे फाइंड अराउंड 25-30 चार्ट्स फ्रॉम दिस बुक। सो दो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. It can cover your at least 5 or 6 MCQs. So you can cover up the syllabus in a very short period. Okay. And if you have time, you can read charts and table from this book also, Alton's Pharmaceutics. So that will again cover your at least 4-5 MCQs. So then again, golden point number 3. This is again very important. Last year there was a as it is MCQ from the
charts given in the book. Okay, so read charts, tables, summary, definitions, law. Any bold content is given over there. Any definition is given over there. Any equation is mentioned. Okay, so charts, tables, they are very important. I am repeating it. Charts and tables are very important. Any definition is important. Bold content, whatever is given in the this book, that is important. Okay, given in the biopharmaceutics and pharmacokinetics by Brahmankar. Okay, so remember these points. It can cover your at least 4 MCQs, 3 4 MCQs from biopharmaceutics. तो अगर आपने ये इसमें के जितने भी टेबल्स है तो वो भी पढ़ लिया तो आपका कम से कम 3 4 MCQ भी कवर अप हो जाएगा. ओके, देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Okay. So again, here in case of Sutix, if you want to read more, you can read whatever charts, tables given in the dispensing for pharmaceutical student by Cooper and Gunn. So Cooper and Gunn का एक बुक मिलता है dispensing for pharmaceutical student. तो उसमें के बहुत सारे चार्ट्स दिए उसने, जैसे लैटिन टर्म्स का चार्ट दिया, so you can cover up that. Then posology का चार्ट दिया है, incompatibility studies है. So those points you can expect 1 or 2 MCQs from that dispensing also. So you see 5 6 MCQs आपके CBS सुब्रमण्यम के 2 बुक्स है उसमें ही कवर हो जाएंगे. 4 5 MCQ आपके इंडस्ट्रियल फार्मेसी के टेबल्स जो मैंने बोला उसमें कवर हो जाएंगे. 2 3 MCQ आपका बायो फार्मास्यूटिक का टेबल में कवर हो जाएगा. 2 3 MCQ आपका डिस्पेंसिंग के टेबल्स में से कवर हो जाएगा. So you can cover up around 50 to 60% Sutix just within a 2 days. But you have to study in a smart way. Okay, so what is important I have mentioned. So you can cover up at least 50 to 60% Sutix syllabus in a very short period. Okay, then again for chemistry they are going to again ask you 38 question from chemistry. So chemistry you should have to read selectively. And what is it? You have to read at least these points from organic chemistry. So what are the points? So first one is the reaction intermediate. So what are the reaction intermediate? Carbon ion, carbocation, free radical. Okay, so stability of carbon ion, carbocation, which one is the more stable, primary, secondary, tertiary. So those points are important. Again, these four reactions, SN1, SN2, E1, E2, these four reactions are very important. SN1, SN2, E1, E2. So these four reactions, please mute yourself. Every year they used to ask a question from this. Please mute yourself. Please, Dipali, please mute yourself. Okay. Then these SN1, SN2, E1, E2 reactions are very important. Every year आप देखो हर एक साल में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. E2 reaction, E1 reaction या फिर SN1, SN2. Last year there was a question on SN2 reaction. Walden inversion. ठीक है. Then Huckel's rule is important. Huckel's rule or Huckel's rule of aromaticity. That is the most important. Which one is aromatic? Which one is not aromatic? They will ask a question like one of the following structure is not aromatic. Okay, so you should be clear about this Huckel's rule. Then rearrangement reaction. So whatever are mentioned in your syllabus या previous year के पेपर में जितने पूछे उतने भी कर लिया, that is enough. Okay? Rearrangement reaction. Then general reaction of aldehyde, ketone, alkanes, aldehyde, ketone, alkanes, carboxylic acid. So that general reactions. Then heterocyclic chemistry is important. Heterocyclic chemistry. So particularly synthesis of your furan, pyron, thiopene, pyridine, etc. etc. Okay, and they might ask you question like Sargap synthesis. So that is for quinoline nucleus, Sargap synthesis. Okay, then they may ask you question like this. One of the following is the highest basic. One of the following heterocyclic ring is the highest, having highest basicity. Yeah, one of the following is having highest acidity. They may ask you question like this: arrange the following heterocyclic structures in the increasing order of their basicity or decreasing order of their acidity, or likewise that. So these try to focus on these points. Then again, stereochemistry is again very important. They used to ask every year at least one question from stereochemistry. So what are the stereoisomers? What are the isomers? What are the positional isomers? What is meant by functional isomerism?
Okay, what do you mean by RNS nomenclature? The rules for RNS nomenclature is important. Then again, E and Z nomenclature. Okay, so then those points are important from organic chemistry. Again, from the cycloalkanes. Okay, cyclobutane, then butane. Okay, their stability, which form is stable. Monosubstituted cycloalkane, like that. So which form is stable, which form is not stable? So chair form is stable or board form is stable? So such kind of questions they used to ask. Then for medicinal chemistry, just focus on these points: classification, then structure. Classification is very important, chemical classification. Okay, then structural activity relationship. Some of important category. SAR of important pharmacophores like your barbiturates, benzodiazepines, tricyclic antidepressants, then penicillins, cephalosporins, then tetracyclines, etc. SAR of acetylcholine molecule, SAR of beta blockers, SAR of alpha blockers. So you can cover up these points. Read selectively so that you can cover up effectively the remaining. You can cover up effectively the syllabus in remaining days. Then try to remember the structure. You can easily remember the structure by just focusing on the heterocyclic ring. Heterocyclic ring में क्या दिया है, उसका heterocycle कौन सा है, उसके ही इसमें आंसर होता है आपका मोस्ट ऑफ द टाइम. या फिर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद है, स्ट्रक्चर भी याद हो जाए. Then synthesis, actually this synthesis part is not much important, but if you want to do, you can you can do synthesis of your फर्स्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली. सो जो भी फर्स्ट मेंबर है, जैसे बार्बिट्यूरिक एसिड है, बार्बिट्यूरिक का मेंबर कौन सा है पहला, फेनोबार्बिटोन. सो फेनोबार्बिटोन को सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है. जैसे कौन सा मेंबर है फ्रॉम बेंजोडाइजिपिन फैमिली. सो व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर, दैट इज either diazepam or chlorodiazepam. So you have to do synthesis of that only. What is the first member of your tricyclic antidepressant? That is imipramine. Okay, phenothiazine. That part is important. Okay, so synthesis अगर करना है तो आपको फर्स्ट मेंबर का ही करना. Okay, so read your medicinal chemistry charts given in this book, uh, Principles of Medicinal Chemistry by KDM, Kadam Marik Bothra, Kadam Marik Bothra, KMB. Okay, then organic chemistry from Bala and Bala. So charts, table, summaries में क्या भी पढ़ लो. So that will cover up your uh, at least 5 to 6 questions from this chemistry. Okay. Now we'll see the next golden point. Again, it is very important. Okay, so from analysis part. So what is important? Again, charts, tables, summary, law, definitions, then various ranges of your spectroscopic range. जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज होता है वो इम्पोर्टेंट है आपका. देन एप्लीकेशंस ऑफ ईच एंड एवरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो रीड charts, tables, summary, laws, definitions, theory and ranges. So what is range for visible, what is range for UV, what is range for near IR, what is range for middle IR, what is range for far IR, what is a fingerprint region. So those points they used to ask frequently. Okay. Then theory part, again theory part of behind each and every spectroscopy. What is the theory behind UV spectroscopy? So what is Beer's law? What is Lombard's law? How there is an electronic excitation? What is a pi to pi star excitation? What is a sigma to sigma star? What is a blue? What is a R band? What is a B band? What is a Z band? Etc. etc. So these points are important from UV. Again, from instrumentation part, what is the radiation source? Okay, what is the radiation source? What is the prism, chromators, monochromators, and all that. Then detectors. Okay, so these theory part. Then again, theory behind your IR. What is the theory? Hooke's law. Hooke's law. What is the molecular vibrations? What are the symmetric vibration? What are the asymmetric vibration? What is the stretching? What is the bending? Okay, like that. So why it occurs? There is a change in the bond length in the stretching. There is a change in the bond angle in the bending. And they can ask you a question like this, that so which one of the following molecular vibration require highest energy? So whether either stretching or bending. So obviously stretching को क्या लगता है, energy ज़्यादा लगता है. So that will stretching bands appears at the higher wavelength in the IR. Bending vibrations that occurs at the lower wavelength in the IR.
Okay, so I don't have time to explain each and everything regarding this now. I will just like to say this theory part, instrumentation part, applications of each and every spectroscopy is very important. Okay, so you can cover up by reading charts table and summary law. Any bold content is there, if any value is given in this book, that is instrumental method of analysis by चकवाल. So इसमें का पूरा चार्ट टेबल रट लो पूरा, आपको कम से कम 2-3 एमसीक्यूज तो इजीली कवर अप हो जाएंगे जितने भी चार्ट्स दिए इसमें. देन अगेन from NMR part, theory is important, instrumentation part is important, handling of sampling system is important in case of IR and NMR. Okay, then again from NMR they can ask you question like this. So how many NMR signals are given by following compound? They can ask you question like this. So they will give you the structure and they will ask how many NMR signals will be given by this compound. Like that part is important. Again from mass spectroscopy, so different instrumentation part, different type of mass analyzer. Okay, उसका रेंज कौन से मास एनालाइजर में कितना मास आप सेपरेट कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. Then again different types of peaks. What is molecular ion peak, what is a base peak, what is a fragmentation ion peak, what is daughter ion peak, what is a isotopic peak. So that is important. Then again fragmentation patterns from mass spectroscopy. What do you mean by alpha cleavage, what do you mean by beta cleavage, what do you mean by retro disulfide reaction, what do you mean by troponium ion formation, etc, etc. So those points are important from mass. Okay, UV, IR, mass and NMR, these spectroscopy techniques are very important. So UV में particularly calculation rules, Woodward feature rule for calculation of your lambda max. So what is the base value for diene? What is base value for homoannular diene? What is the base value for heteroannular diene? So they used to ask question frequently on this. Okay. Then from your chromatographic part, just do the theory part. What is a Van Dimitar's equation? Okay, what do you mean by theoretical plate? What do you mean by height equivalent to theoretical plate? So those theoretical points are important. Then from instrumentation part of your HPLC, so read different type of pumps. What is pumps? What is meant by isocratic technique? Isocratic technique. What is meant by those two illusion, isocratic illusion and gradient illusion? What is meant by that? Okay, then what is meant by RF value, what is meant by retention factor, what is meant by retention time. Okay, so what is the relation between your resolution and theoretical plate. So those kind of points are important. So you may find this in this book. So try to cover up this book in a very short period. And for your volumetric part, you can read charts table given in this book. Pharmaceutical analysis pharmaceutical analysis by NLD profession, volumetric analysis. So इसमें all the titrations, theory behind each and every titrations. So what are the different? What do you mean by your Arrhenius theory? What do you mean by Laurie-Bonstead theory? As Laurie-Bonstead theory of assay base. Then what is indicator? What is the theory of indicator? What is indicator range? That is important. The endpoint determination. What are the titration curves? That is important again. Non-aqueous titrations. What is non-aqueous titrations? What do you mean by protogenic solvent? What do you mean by protophilic solvent? What is mean by aprotic solvent? How endpoint is determined in case of non-aqueous? So those kind of points are important. From complexometric titration, they already asked the question: what is PM indicator? Metallochromatic indicator. So उस kind का problems थोड़ा सा करो, ठीक है. So types of titration, their theory, their indicators used in the titrations, those points are important. Then endpoint prediction method, endpoint method for your precipitation titration is important. So what is mean by whole hard method? What is mean by deep adjust method? So those points are important. So you can read cover up your pharmaceutical analysis easily by reading these points from these two books. Read again charts theory. Okay, read charts theory, summary definitions, law, if any kind of range is given. Okay, range, okay, these points from analysis part. So that will cover up at least your 4 MCQs. ये दो बुक में से आपको 4 MCQ आएंगे, easily cover up.
Then read charts, table, summary, MCQ given in the book of Biochemistry by Satyanarayana. This single book cover your at least 5 MCQs. ठीक है, ये सिंगल बुक आपका 5 MCQ कवर कर लेगा. सत्यनारायण बाय बायोकेमिस्ट्री, जितने भी चार्ट्स दिए, जितने भी टेबल्स दिए, जितने भी बोल्ड कंटेंट में कुछ लिखा है, या फिर कोई यहाँ पे डिसीज दिया है, ओके, डिसीज या फिर कोई टेस्ट दिया है, जैसे frequently they used to ask question on this, what is the test, how could you distinguish between reducing sugar, non-reducing sugar, so that is a Bendick test. How could you distinguish between aldoketones and aldohexes, that is nothing but the Selivanov test. So these tests are important. Then classification. Okay, so forget about that points. Read charts, tables, summary, and MCQs given behind this Satyanarayana. Okay, and read, if you can read charts and tables given in the anatomy physiology by Ross and Mason. That these two books will cover at least your 6-7 MCQs. Okay, so this single book Biochemistry by Satyanarayana, that can cover your at least 4 or 5 MCQs. Okay, then anatomy physiology में से जितने भी charts है उसमें चार्ट्स पढ़ लो, एटलीस्ट चार्ट्स टेबल्स, तो उसमें क्या भी आपको कम से कम 2-3 MCQ 100% फंस जाएगा वहाँ पे. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, दैट हाउ यू कैन इजिली कवर अप. That was 6 golden point. Now 7th golden point. Okay, read again charts, tables, summary, MCQs given in the microbiology and biotechnology by Chandrakant Kokre sir. Okay, so that is by Nirali Prakashan. निरली प्रकाशन का एक बुक आता है. वैसे मैं निरली प्रकाशन का बुक कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता, बट particularly these two books are very good. Okay, pharmaceutical microbiology by Cochrane and this pharmaceutical biotechnology by Cochrane. You can easily cover up in 4 hours only. Both subject you can expect around 3 to 4 MCQs from these two books. 3-4 MCQs आपको easily cover up हो जाएंगे इस बुक में से. So what you have to read charts, table, summary and MCQ given behind the each chapter. ये देखो इसमें क्या है, 5 या 6 MCQs दिए, 5-6 MCQs या 7-8 MCQs हर एक चैप्टर के पीछे दिए ये बुक में. ठीक है, और ये बुक में भी है. सो इट कैन कवर अप योर एटलीस्ट 4-5 MCQs फ्रॉम द जीपेट पेपर. 4-5 MCQs आ सकते हैं इसमें के, तो 2-3 MCQs तो इजीली आपका हो जाएगा. ठीक है, सो रीड चार्ट टेबल समरी फ्रॉम दिस टू बुक्स. It is very important. Now golden point number 8. This is very important because most of the questions they are going to ask you from pharmacology. So read charts, tables, summary, MCQs given in the review of pharmacology by Gupta and Garg. Review of pharmacology by Sparsh Gupta. Yeah, Govind Rai Gupta and Sparsh Gupta. This book is very important. You can cover up your pharmacology in a very short time. So इतना भी इजी नहीं है कि वो बुक भी छोटा नहीं है, बहुत मतलब ठीक ठाक बुक है, बड़ा सा बुक है. तो उसमें कि कम से कम एटलीस्ट चार्ट्स दिए, वहाँ पे टेबल्स दिया है, तो वो तो पढ़ लो ना एटलीस्ट, उसमें से कवर अप हो जाएगा आपको. सो यू कैन रीड होल द चार्ट्स एंड टेबल इन 1 डे. एक दिन में इसके पूरे चार्ट्स टेबल्स पढ़ सकते हो आप इस बुक के, एक दिन. और उसके पीछे जो MCQs है वो भी पढ़ लो, that will also help you. So you can expect around 10 questions from these two books. 10 questions. ठीक है, आपका कवर अप हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा इसमें. So if you don't want to read this book, you can read lectures notes in the pharmacology by Kalpan Makul. इसके पीछे भी कुछ MCQs दिए. ठीक है, बहुत सारे क्लासेस वाले ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन जो क्लासेस चलते हैं आपके, एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करेंगे, एज इट इज पूरे क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किए यहाँ इस बुक में से, और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज के लिए वो बेच रहे हैं 2000 रुपीज, 3000 रुपीज. मतलब कुछ भी नहीं किया, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया क्वेश्चन, वहाँ पे आपके उनके एप्लीकेशन में डाल दिया और बोल रहे हमारा टेस्ट सीरीज. तो कुछ नहीं है, ये सब मोह माया होता है, इसमें मत पढ़ो. आप खुद देखो, आपने अगर खुद से कुछ नहीं किया ना, तो कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता. Nobody can help you unless you help yourself. Okay, remember this line for your rest of the life. पूरे लाइफ में ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आप खुद की हेल्प नहीं करना चाहते तो nobody is going to help you. ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फार्माकोलॉजी के लिए. Charts, tables, summary, MCQ given in the review of pharmacology by Gupta and Garg, and notes in the lecture notes in the pharmacology by Kalpan Makul. ये दोनों बुक बहुत ही शॉर्ट में होता है.
ये कल्पन मकबूल का बुक तो मैक्सिमम 150 पेजेस का या 200 पेज का है, तो यू कैन इजिली रीड इन वन डे इटसेल्फ, ठीक है। तो एक दिन में आप फार्माकोलॉजी कवर कर सकते हो इस बुक में से, आप आपने अगर थोड़ा बहुत भी सीरियसली आपके कॉलेज में किया है तो, ठीक है। हाँ, अगर आपको बेसिक कुछ भी पता नहीं तो आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो आप जीपैट दे दो ही मत, इसका मतलब, ठीक है। तो इट कैन कवर अप योर एटलीस्ट 10 MCQs in a one day. So you can cover in a very short day, short time. Again, golden point number 9. So what you have to do, you have to read whatever tables are given, charts are given, summary is given in these books. First is a pharmacognosy by Gokhale Kokade. ये बुक में जितने भी टेबल्स दिए सब पढ़ लो, जितने भी टेस्ट दिए सब पढ़ लो, इंट्रोडक्शन पार्ट जो दिया है, जो WHO गाइडलाइंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फ्रॉम दिस बुक में से, ये बुक में से पढ़ सकते हो, या फिर ये बुक में से जो भी WHO गाइडलाइंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर दे यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज द स्पोर साइज ऑफ योर lycopodium spore, and how many number of spore are present in the 1 milligram of powder, lycopodium powder. So every year they used to ask what is the stomatal index, what is stomatal number and all that. So वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में WHO स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर में ये माइक्रोबियल लिमिट होता है, उसके बाद में हेवी मेटल लिमिट्स होता है, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। देन रीड चार्ट टेबल समरी, जितने भी चार्ट दिए हैं ये बुक में आपको अल्कोलाइड के एक दो पे अल्कोलाइड चैप्टर के में एक दो पेज के बाद आपको एक चार्ट मिलेगा, जैसे बायोलॉजिकल सोर्स एंड नेम, केमिकल कांस्टेंट, यूजेस, उसका एक चार्ट मिलेगा। वो चार्ट आप इजीली कवर अप कर सकते हो, 10-15 मिनट में पूरा अल्कोलाइड्स कवर अप हो जाएगा। देन उसके पीछे हर एक अल्कोलाइड्स, जैसे हर एक चैप्टर होता है उसके पहले उन्होंने क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में दिया है टाइप्स ऑफ अल्कोलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोलाइड्स, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्माकोग्नोसी। सो व्हाट आर द डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर alkaloids, glycoside, terpenoids, tannins, volatile oils, okay, then saponins. So you can easily cover up the syllabus by reading in this way. Then again from herbal drug technology by Agarwal, इसमें का एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक चैप्टर है आपका, वो पढ़ लो। WHO स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर है वो पढ़ लो। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस है, जैसे ट्रेडिशनल डोसेज फॉर्म का, व्हाट इज मीन बाय असवा रिस्टर, व्हाट इज मीन बाय अवलिया, so you can cover up in a very short way. आप हाफ डे में पूरा आप कवर अप कर सकते हो कोगनोसी। यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड अराउंड 4 to 5 or maybe more than that, 5 questions तो at least you can cover up by reading charts and tables. Then read charts, table, summary, MCQ given in the following books, like Quality Assurance by Nirali Prakashan and Pharmaceutical Industrial Management by RM Mehta. So आपने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। So at least you can cover up the read. At least you can read charts, tables given in the book. Charts, table, MCQ given in the Pharmaceutical Quality Assurance by Nirali Prakashan. So what is important? Just try to understand the different ICH guidelines, different ISO standards. What do you mean by NDA? What do you mean by ANDA? What do you mean by orange book? What do you mean by blue book? What do you mean by green book? तो वो सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द थियरीज रिलेटेड टू क्वालिटी सिस्टम, ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज मीन बाय वैलिडेशन, व्हाट इज मीन बाय कैलिब्रेशन, so that points are important. And whatever MCQs they have mentioned in the behind each and every chapter, just do thoroughly. 10 MCQ करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं। So you can easily cover up your qualification. You can expect 2 or 3 questions from these two books. 2-3 questions. Next golden point is read charts, table, summary, MCQ given in the pharmaceutical jurisprudence by pharmaceutical jurisprudence Yadav and Mari. एक बुक है, इसमें एमसीक्यूज भी दिए है, तो उसमें एमसीक्यूज भी कर लिए आपने, उसमें के 3-4 एमसीक्यूज फंस जाएंगे आपको, दैट इज इनफ, ओके। रीड चार्ट्स, टेबल, समरी। अभी इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करने को है आपको, लेकिन टाइम नहीं, जितना मैंने लेक्चर में लिया है दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। देन ये पढ़ लो आप, इसमें के 2 क्वेश्चंस तो आपको फिक्स आए। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट इज नथिंग बट द प्रीवियस पेपर्स। सो आप जितना भी बचा कुछ टाइम है इसमें आप 5 ईयर प्रीवियस पेपर्स तो आप कवर अप नहीं कर सकते, या फिर अगर कोई कर सकते दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट
प्रीवियस 3 इयर्स पेपर आप पूरा बाय हार्ट कर लो, उसमें क्या आपको कम से कम 4 या 5 MCQs उसमें कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट, इफ यू डोंट वांट टू रीड अबाउट एनीथिंग, आपको इसमें का कुछ भी नहीं पढ़ना है तो आपको सिर्फ ये बुक पढ़ना है। कौन सा? फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट नाइपर डीआई परफॉर्मेंस ओनली फर्स्ट। ये बुक जिसके पास है उसमें का जितना भी टेबल्स दिया है मैंने, जितना थ्योरी पार्ट दिया है वो पूरा बाय हार्ट कर लो। लास्ट ईयर देयर वाज अराउंड 55 60 एमसीक्यूज, ये बुक में से ही कवर अप हो जाएंगे, इतना थ्योरी पार्ट इसमें है। 55 60 एमसीक्यूज इज नॉट अ सिंपल थिंग, ठीक है। 55 60 एमसीक्यूज आपको कवर अप हो जाएंगे इजीली ये बुक पढ़ने के बाद। बहुत सारे बच्चों के पास मेरा बुक है, जिनके पास नहीं है, जो लोकली है अवेलेबल, जो औरंगाबाद में रहते हैं वो मेरे पास आ सकते हैं, बुक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपका 55 60 एमसीक्यूज 100% कवर अप कर देगा, ठीक है। अगर ठीक है, अगर anybody don't want to read above points, they can read from this book, okay? And this cracker achor is also there, एमसीक्यू बुक है, एक शॉर्ट बुक है छोटा सा, वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें से भी 25 30 एमसीक्यूज एज इट इज चांसेस बनता है, ठीक है। Okay. So this was our first session, and now we'll see the our remaining